नमस्कार दोस्तों। आज इस शनिवार की विशेष सभा है। आज के सभा में हमारे एक बहुत खास मेहमान को मैंने बुलाया है आप लोग के डिमांड पे, क्योंकि हमने उनके साथ 2 शोज किए थे और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और कुछ पेरेंट्स के सवाल भी आए थे दोस्तों, क्योंकि जो हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर टीपी शशि कुमार जी, डॉक्टर टीपीएस एज ही फॉर्मली वांट्स टू बी कॉल्ड। सो उनकी वैसे तो हर एक क्षेत्र में उनकी एक्सपर्टीज है, बट उनका जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन और बच्चों को स्ट्रांग बनाने की जो उनकी विधि है और लोगों ने देखी है, पेरेंटिंग के बारे में आजकल बहुत सवाल है। सो मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी एंड हमने डिसाइड ये किया कि बच्चों का संपूर्ण विकास कैसा हो। तो आप लोगों ने जो लोग डिस्क्रिप्शन जिन्होंने आज पढ़ा है अभी, तो उनको दिख रहा होगा कि उसमें 4-5 चीजें मेनली हैं जो डॉक्टर साहब कवर करेंगे कि 5-fold पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम बच्चों की कैसे करें। सो शो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना शहर का नाम और अगर बाहर से जुड़ रहे हैं तो प्लीज वो कमेंट करें, सो दैट कि हमें ये थोड़ा आइडिया होना शुरू हो कि कहाँ से हमारे दर्शक लोग जुड़ते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोगों को मैंने बोला कि प्लीज ये जो मेरा सैटरडे आज जो मैं शो कर रहा हूँ स्पेशल, ये कुछ बहुत ज्यादा मैं डिमांड पे इसलिए करता हूँ कि मुझे इसलिए लगता है कि बच्चों के लिए ये सब चीजें हमें ही सिखाना है, क्योंकि जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है उसमें सब चीजें नहीं बताई जाती। और लाइफ में मैंने देखा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे और इमोशनल या स्पिरिचुअल तरह की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। और ऐसे में जो डॉक्टर टीपीएस जैसे लोग हैं जिनको महारत हासिल है, जिन्होंने अपनी जिंदगी इसमें निकाली है सब कुछ देखते हुए, तो हमारे को ऐसे विद्वानों की जब हमें मार्ग प्रदर्शक के रूप में मिलते हैं तो वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। और मैंने कहा था अपने बच्चों को लेकर बैठ गए आज और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। सो आज का जो शो होगा डॉक्टर साहब के साथ, उसका मैं थोड़ी सी भूमिका आप लोगों को बता दूं। जिन लोगों ने मेरे ख्याल से थर्सडे का शो था डॉक्टर पांडे के साथ, उन्होंने क्वांटम हीलिंग पे किया था। तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि ये क्वांटम हीलिंग किसी और तरीके से भी हो सकता है क्या? तो उन्होंने एक बात बोली थी कि हाँ हो सकता है, अगर आपका माइंड इतना स्ट्रांग है तो यू कैन आस्क योर माइंड, यू कैन जो बोलते हैं अभिमंत्रित कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा उस पर डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो आपको माइंड उतना स्ट्रांग आपको बनाना पड़ेगा। और उसको माइंड को कैसे स्ट्रांग बनाना है उसके लिए हम आज बीच में डॉक्टर साहब से कुछ एक सवाल भी पूछूंगा, और आप लोग भी दोस्तों जो भी आपके सवाल हैं आज डॉक्टर साहब से आप 1-to-1 पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों हमारे सारे जो समग्र पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए हमारे को सिर्फ बार बार बोलता हूँ, सिर्फ एक चीज पे हमने फोकस नहीं करना है। मैंने अभी स्टार्ट किया फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन जब तक सारी चीजें हम नहीं लेंगे, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल तो है ही है, और डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि हम कैसे स्टेप्स बाय स्टेप्स लेके हम अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। सो प्लीज हेल्प मी इन ज्वाइनिंग द ग्रेट डॉक्टर टीपीएस टू द शो। डॉक्टर साहब वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग अगेन ऑन आवर शो। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब, जस्ट अ सेकंड। या वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्ते my brother Ajit from Australia. We had earlier also 2 shows. Namaskaram to all the viewers and I had a lot of response. Many people contacted me. ये बहुत खुशी की बात है, लोग हमसे बात करेंगे उसके बाद कुछ इंटरेक्शन हो जाएगा तो अच्छा रहता। So I enjoyed the show. It's very good, nice. संपूर्ण विकास जी जी डॉक्टर साहब, तो एक सब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हुई है, बट जितना हो सकेगा अगर हिंदी बोलेंगे तो हमारे लिए बहुत, क्योंकि हमारे दर्शक मेनली वो हैं, बट आई अंडरस्टैंड। मैं बीच में अगर कुछ हुआ तो मैं आपको हिंदी में लोगों को बता दूंगा, लेकिन प्लीज आप हमारे को उस मार्ग पे लेके चलिए डॉक्टर साहब। वहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि आप बच्चों को, हमारा फ्यूचर जनरेशन है जिससे बोला जाता है कि अगर आप अगले 100 साल के लिए सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग 100 years ahead, then you need to educate your children. संपूर्ण विकास या संपूर्ण विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बट आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे टैबलेट मैकेनिज्म्स
बेचने के लिए बहुत है लोगों के पास, खरीदने वाले भी बहुत लोग हैं। आप ज़्यादा मार्केट करें तो ज़्यादा लोग खरीद लेंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज संपूर्ण विकास। बट एक्चुअली संपूर्ण विकास में पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपका स्ट्रांग बॉडी नहीं है तो स्ट्रांग माइंड नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद ने ये बताया पहले, wherever there is a strong muscle, strong body, your mind will become very strong। वो विवेकानंद जी ने नहीं बोला, उसके पहले ही हठयोग प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका says शरीर मनसो योग परस्परमनुव्रजेत आधार आधेय भावेन तप्ताज्य खड़योरिव। शरीर बॉडी एंड माइंड, our mood, feeling, मनसो that comes from मनस, वो मनस से आता है, मन से आता है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किससे करना है, किससे नहीं करना है, ये पूरा मन से आता है। सो शरीर बॉडी मनस परस्पर अनुव्रजेत, वो ऐसे रिलेटेड है। हमारा हॉट बर्तन में कोल्ड ऑयल डाले तो ऑयल गर्म हो जाता है। सो स्ट्रॉन्ग बॉडी है तो मनस बिकम स्ट्रॉन्गर, फीलिंग बिकम स्ट्रॉन्गर। वो मसल्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉडी मीन्स इट नोज हाउ टू कंट्रोल। इसलिए हमारा योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्राणायाम, हमको माइंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कंट्रोल द माइंड, कंट्रोल द माइंड, माइंड कंट्रोल, माइंड मैनेजमेंट, बहुत सारे लेक्चर्स दे सकते, बट ये अपना कंट्रोल पे है, दूसरे कंट्रोल पे, लेक्चर पे, बात पे, दिमाग पे नहीं है। इनसाइड अंदर से आता है। सो हाउ डू यू डू दैट? वन मेथड, हमारा टेंशन, वरी, डीप फीलिंग, वो कोई भी होने दो, डीप फीलिंग, ब्रेथ रेट, ब्रेथ कंट्रोल गोज आउट ऑफ कंट्रोल, ब्रीथिंग रेट ज्यादा हो जाता है, जनरली 19 breath per second, but then if your breathing rate increases to 40, you behave like a dog. That is why when somebody gets angry we say don't bark like a dog. आपका breathing rate change हो गया तो feeling also will change, your reaction will change, the style in which you react वो भी change हो सकते। so directly मनस को कंट्रोल करने के लिए मुश्किल है, इसलिए कैसे कंट्रोल करना? शरीर से कंट्रोल करना, बॉडी से कंट्रोल करना। फर्स्ट प्राइम इंपॉर्टेंट, मनस कंट्रोल करने के लिए भी शरीर को कंट्रोल करना इमीडिएट। एंड शरीर का कंट्रोल, मनस का कंट्रोल बाकी लोगों को कैसे मालूम होता? हमारा कम्युनिकेशन से, वाक, वर्ड्स। व्हेन यू गेट एंग्री, वर्ड्स विल बिकम बैड, words will become useless words we will join together, or useful words we will join together to create useful bad sentences। वो ऐसे जोड़ते, वो एक एक वर्ड्स अच्छा रहता, बट वो ज्वाइन करके यूज करने के टाइम पे वो खराब मीनिंग हो जाता। कुत्ता अच्छा है, बच्चा भी अच्छा है, वो गुस्सा आने से दोनों छोड़ के हम यूज करते, जोड़ के यूज करते, वो टाइम पे वो बहुत खराब वर्ड होता है ना, सेंटेंस होता है। तो ये कहां से आता? हमारे मन से आता है। सो 3 कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट कंट्रोल मनस, सेकंड कंट्रोल डायरेक्टली नॉट पॉसिबल, इसलिए शरीर से। थर्ड कंट्रोल वाक, वर्ड्स, कम्युनिकेशन। इट्स अ ब्यूटिफुल, वेरी 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 ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग मैसेज। सब लोग योगा का प्रैक्टिस करते हैं, इतना पॉपुलैरिटी दिया है उसको। सब लोग पतंजलि के बारे में बात करते हैं। पतंजलि का फर्स्ट श्लोक ऐसा है, पतंजलि के बारे में
हम प्रेयर करते, ध्यान श्लोक है पतंजलि. इन दैट ध्यान श्लोका इफ यू टेक, कौन है ये पतंजलि? पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास का महागुरु है. सो संपूर्ण विकास कैसे होना है? योगा. कल भी मेरा एक 30 जून मेरा एक लेक्चर था. 21 जून पे मैं केरला पे एक लेक्चर दिया था. ऑल दिस लेक्चर आई ओनली कोट ए ध्यान श्लोका. किसके बारे में? पतंजलि योग, पतंजलि के बारे में ध्यान श्लोका. सबको ये कोई भी योगा में इंट्रोड्यूस किया उसको ये श्लोक मालूम है, उसका मीनिंग तो मालूम नहीं है. अंतरार्थ है उसको, अर्थ नहीं, अंतरार्थ. मैं अभी तक क्या बोला वो मन में सोच के वो श्लोक एक बार पढ़े तो अंतरार्थ भी मालूम हो जाता. तो कौन है पतंजलि? योग चित्त वृत्ति निरोध. चित्त वृत्ति, मनस हैज टू बी कंट्रोल्ड. वो कौन है? ही इज मलम शरीरस्य. ये शरीर पे, बॉडी पे देयर शुड नॉट बी ए पोल्यूशन. द बॉडी हैज टू बी क्लीन. मलम इज पोल्यूशन. मलम शरीरस्य वैद्यकेन च. वैद्य इज नॉट डॉक्टर. वैद्य इज वो शरीर को क्लीन करके कौन रख सकते? मेंटेनेंस पर्सन, क्लीनिंग, साफ करने वाला. वो रोग आने के बाद ट्रीटमेंट देने वाला रोग, वो डॉक्टर्स अलग है, वो डॉक्टर्स है. वैद्य कौन है? हमारा बॉडी कैसे क्लीन करके कैसे रखना है. दैट प्रिस्क्रिप्शन इज गिवन बाय पतंजलि. पतंजलि है उसका फर्स्ट वैद्य. वाक एंड वाक, वर्ड हैज टू बी क्लीन. सो 3 things: word, manas and shariram. All the 3 things are combined together and used by Patanjali. And namaskaram to that Patanjali. Yeah, beautiful, beautiful. Doctor, थोड़ा सा simple terms में, when you say manas, what exactly is manas? What is exactly like in English? What is that equivalent term? I know English is a very poor language. खाने के लिए मुझे मन आ रहा है. क्या खाने के लिए? मिर्ची बज्जी खाने का मन है अभी. वो कौन बोल रहा है मिर्ची बज्जी? मिर्ची बज्जी बोले तो उसका स्मेल अभी आ जाता है सब लोगों के. मिर्ची बज्जी का स्मेल आ गया. आपके पास नहीं है, आपके सामने भी नहीं है, उसका शेप भी आ गया. मैं शेप नहीं दिखाया, पिक्चर नहीं दिखाया, सिर्फ मिर्ची बज्जी बोला. सब लोगों के पास मिर्ची बज्जी का शेप है अभी. ये इतना भी नहीं है, वो खोल के उसके अंदर देख लिया आपने, वो टेस्ट करके टेस्ट भी आ गया. सो हमारा पंचेंद्रिय है. पंचेंद्रिय, आईज, ईयर्स, नोज, टंग टेस्ट और स्पर्श. वो हॉट है, वो नहीं है, वो टच करके वो भी मालूम हो गया आपको भी. मैं एक इंद्रिया को एक इंफॉर्मेशन दिया तो दूसरा इंद्रिया को कनेक्ट करके जोड़ करके करने वाला हमारा शरीर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है. वो मनस क्या है? मनस इज द सॉफ्टवेयर. वो वेस्टर्न साइंस में मनस नहीं है. वेस्टर्न साइंस में बुद्धि है, बुद्धि, इंटेलिजेंस, और उसको थॉट्स है. थॉट्स मीन्स आवर इंटेलिजेंस कीप कनेक्टिंग टू many things together and it becomes like a flow of thoughts. But feelings कहां से आता है? वो माइंड से. माइंड इज नॉट ब्रेन. हमारा माइंड इधर है. अजीत का मम्मी का पिक्चर कहां है अभी? आपका मनस में है, मनस में है. वो रिट्रीव करने के लिए कितना टाइम लगता? 9 seconds. करेक्ट. मैथ्स में एक क्वेश्चन पूछे तो वो दिमाग ये कहां से लेता? ब्रेन से लेता है. अभी डिफरेंस मालूम हो गया आपको? कुछ फीलिंग्स है, लव है, हेट्रेड है, पसंद है, ये तो कुछ पसंद नहीं है, कुछ झगड़ा किया है उसके बारे में, वो कहां रहता? रैम में रहता, रोम में नहीं है.
इंस्टेंटेनियस मेमोरी मनस, सॉफ्टवेयर मेमोरी मनस, हार्डवेयर मेमोरी बुद्धि. गॉट इट. आपका एक पहचान वाला कोई है, रोड में वो आ रहा है, वो आने के टाइम पे आप सोचते ये कहाँ मिला है उसको, वो डॉक्टर टीपीएस बोल के एक आदमी आया था बहुत पहले, कुछ लेक्चर दिया था, वो होगा. वो डाउट है, पक्का नहीं है, डाउट है. क्यों? मेरा पिक्चर आपका मन में नहीं है, ब्रेन पे है. आपको मम्मी को देख के कभी भी कोई बोला होगा ये कहाँ है, वो देखा है मैं पहले कभी भी, ये मेरा मम्मी है क्या बोल के सोचने का टाइम नहीं चाहिए ना. सो आपको लव है, फीलिंग है, पैशन है, आप कहाँ रहते हैं, वो पूरा पिक्चर्स हमारा मन पे रहते हैं. वो रैम का मेमोरी कितना है, टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स. बट हम कितना यूज करते, थोड़ा ही यूज करते. अभी मैं श्लोक बोल रहा हूं, मेरा लेक्चर श्लोक कहां से आते हैं, वो ब्रेन है तो मैं सोचना पड़ता. आप क्वेश्चन पूछते मैं सोचते, वो ब्रेन से नहीं आ रहा है, मन से आ रहा है. दैट इज द डिफरेंस. इसमें आते हैं डॉक्टर साहब डिटेल में, विल गो डीप टुडे बिकॉज़ सो लेट्स फॉर पेरेंट्स हु आर जॉइनिंग लेट, आज का जो शो है डॉक्टर साहब के साथ, इट्स अ डेवलपमेंट इन 5 फोल्ड. और आप डॉक्टर साहब ने एक बहुत ब्यूटीफुल शुरुआत की है कि जो गुरु है वो हमारे ग्रेट पतंजलि जी हैं, जिन्होंने रूल तो नहीं, उन्होंने गाइड किया कि उन्होंने लिखा हुआ. सो डॉक्टर साहब जो 5 चीजें, जो 5 फोल्ड पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, हमारे बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसको हम वो जो 5 चीजें जो 5 फोल्ड है वो कौन कौन सी चीजें हैं, और पहले इस पे क्या बात करते हैं, फिर आके मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. सी बॉडी फर्स्ट, हमको एक शरीर है, लाइफ है, और स्ट्रांग रहना है, नंबर 1. नंबर 2 फीलिंग्स. कौन है मेरा शत्रु, कौन है मेरा मित्र, कौन है मेरा रिलेटिव, वो कहाँ पे रखना है, उसको नजदीक में किसको लेके आना है, दैट डिसीजन. इमोशनल, वो इमोशनल में कंट्रोल नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम्स होता है, बहुत लोगों को वो प्रॉब्लम है. सो फर्स्ट फिजिकल स्ट्रांग बॉडी, इमोशनल बैलेंस्ड इमोशनल. ये इमोशन बैलेंस नहीं है तो बॉन्डेज होता है. ये बॉन्डेज कैसे होता है, यू लव समबडी, उसको एक बार नहीं मिले तो परेशान हो जाता. क्यों हो रहा है, बिकॉज योर इमोशन इज नॉट बैलेंस्ड. समबडी डाइड और यूर सम डिफेम हैपेंड, एग्जाम पे फेल हो गया, यू हैव डिफेम्ड, योर फीलिंग्स इज अनस्टॉपेबल, तो क्या करेंगे आप, सुइसाइड कर देंगे बस. सो फीलिंग कंट्रोल नहीं है तो यू हैव नो लाइफ. थर्ड वन इंटेलिजेंस, बुद्धि. यू हैव टू कीप ब्रिलियंस. इफ दिस ब्रिलियंस इज नॉट देयर, arithmetic is not there, reading possibility is not there, writing possibility is not there, and memory is not there, you cannot be a good student. As a human being, for every student, most important intelligence. But intelligence gives you knowledge, information, analysis, created knowledge. वो कहाँ कब कैसे यूज करना. यू नीड योर फीलिंग्स, मनस. सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो गया तो क्या होता, इंटेलिजेंस बहुत पूरा इंफॉर्मेशन से मेरे पास पूरा भर गया है, एक आदमी क्वेश्चन पूछे तो नहीं मिल रहा है आंसर. क्यों, टेंशन. वो टेंशन कहां से आता, ब्रेन से नहीं, फीलिंग से आता है. तो इंपॉर्टेंस का फीलिंग्स भी मालूम हो गया ना. सो इमोशन, मनस, ब्रिलियंस, बुद्धि. इंग्लिश वर्ड नहीं है इसके लिए, सिर्फ हमारा संस्कृत, हिंदी, इंडियन लैंग्वेज पे रहता बुद्धि. थिंकिंग नहीं है वो, कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धि मनस टुगेदर बिकम्स थिंकिंग. सब लोग वेस्टर्न साइंस में सिर्फ ब्रेन को बोलते हैं थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, मनस नहीं है उसको. हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है. सो बॉडी, मनस, बुद्धि, उसके बाद हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी. हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी. योग में भी ये भी बोला है, नॉन वायलेंस, इंटरनल वायलेंस, मनस का वायलेंस. हाउ डू आई रिएक्ट टू समबडी एल्स, एक्सटर्नल वायलेंस.
internal silence. I can be a silent person in the society also. I can. So people consider, oh, this man, he is a very silent man, he is a very brilliant man. हमारे पास brilliance है, but वो society को नहीं बोले तो no use, because we are a social being social. We are a human being human. मैं अच्छा आदमी है, no use. I have to show. I have love towards somebody. What is the purpose if I don't show? So being in society, because every item in my body is given by society. मेरे पास कुछ भी मेरा नहीं है. मैं पैसा देके कुछ मेरे स्पेक्स लिया है. ये स्पेक्स बनाने के लिए कितने आदमी कितना काम किया होगा ना, बहुत मेहनत के बाद ये बनाया. तो I must be thankful to everyone. What a great thought is this. A thought, when I have this thought, I work for the society. A small pencil, how many people are working to make this? The tree is made by the earth, the Panchabhuta. So I am responsible to Panchabhuta. Society means environment, my atmosphere, my nature, people around, every animal around, every Buddhas which I am seeing or unseeing. All such creatures I am responsible. I am grateful to them. That feeling is social. So children have to develop this social feeling. Physical growth, emotional balance, intellectual sharpness, social commitment. All these leads to the largest growth. Only human being. पूरा animals को भी ये सब है. Varied proportions. Percentage अलग अलग होता. Physical strength, elephant has more. Why elephant? Ants has more physical strength than human being. हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं पागल हो गया क्या? Ants has more physical strength than human being. मैं क्यों ऐसे बोल रहा है? An ant can take 60 times more weight than its own weight and carry and walk. आप देखा होगा, a grain it will carry, one ant will carry one grain and then pull it. The weight of ant, weight of grain. आप देखें तो it is almost 60 times. We cannot carry 300 kg and walk like a ant walking. It's not possible. क्यों? हमारा ताकत कम है. Understand? Eyes. Eagle has more eye power than all of us. Whales in the sea has got a sound which can travel quite long. वो fish के लिए ये अंडर वाटर दे कैन कम्युनिकेशन कर सकते हैं. हमको उतना पावर नहीं है, हमारा फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. 100 of miles, yes. 100. So physical strength we don't have. इमोशनल अटैचमेंट हमको इतना ज्यादा नहीं है. कुत्ता बहुत ज्यादा इमोशनल बीइंग है. इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारे ज्यादा इंटेलिजेंस बहुत सारे एनिमल्स है वर्ल्ड में. बहुत बड़ा बड़ा हेड है, छोटा हेड में बड़ा इंफॉर्मेशन भी है उसके पास. सोशल, हमारे से ज्यादा सोशल है मंकीज, हमारे से ज्यादा सोशल है एंट्स. यू कैन सी many ants work together to make a big bridge in the water. सोशल कमिटमेंट कितना ज्यादा है उसको, हमको उतना ज्यादा नहीं है. वी स्टार्ट फाइटिंग, सोशल बीइंग नहीं है उतना ज्यादा. बट व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग द ग्रेटेस्ट? हम क्यों ग्रेटेस्ट बोलते हैं? स्पिरिचुअल. वी आर द ओनली स्पिरिचुअल बीइंग. सो मैक्सिमम डेवलपमेंट इज स्पिरिचुअल. फिजिकल, इमोशनल, intellectual, social, spiritual. So all the time I speak about five-fold development. Everything can be connected. So full personality, supreme personality. If you develop all these, आप कौन बना सकते? Supreme personality. कौन है supreme personality? भगवान, मूर्ति. Supreme personality is भगवान. So we ourselves will become भगवान. ऐसा लोग थे. कि हमारा जो ह्यूमन फॉर्म जो मिला नहीं है, we are so blessed to get this human form. और इसीलिए मैंने अपने शोज में मैं बार बोलता हूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी को नंबर 1 टर्म करता हूँ. आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे तो आपको सारी चीजों का बोध होना शुरू, ज्ञान होना शुरू हो जाएगा. सो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही ब्यूटीफुली 5 चीजें बताई.
इनफैक्ट मेरे ख्याल से लास्ट वीक ही मैंने एक शो में बोला भी था, ये एग्जैक्टली आप वाली बात बोली थी कि एंड्स, अगर हमारे में पावर हो तो हम ह्यूमन बीइंग्स वी कैन लिफ्ट अ बस, वी कांट इवन लिफ्ट अ कार। सो हम पावरफुल भी नहीं है, इस हिसाब से मसल स्ट्रेंथ नहीं है, और सोशल भी नहीं है। सोशल में आपने एंड्स का बोला, यू नो इवन द वाइल्ड डॉग्स आर द मोस्ट सोशल एनिमल्स आई नो, दे आर लाइक क्रेजी सोशल एनिमल्स। सो हमारा जो, अब ये तो हमारी लिमिटेशंस है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी का जो भगवान ने हमारे अंदर दिया है, प्लस जो एनालिसिस का फिर भी हमारे अंदर है, और जो हम फ्यूचर को देख सकते हैं, वो सब एनिमल्स दे डोंट इवन सी फ्यूचर। जो हमारे में एक मैंने वीडियो भी बनाया है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। दे डिड अ स्मॉल व्हाट डू कॉल इट प्रैक्टिकल 4-5 years old kid ऑक्सफोर्ड में या हार्वर्ड में बिठाए उन्होंने, दे गिव देम मार्शमैलो, और उन्होंने बोला कि अगर आप अभी तो आपको 2 नहीं मिलेंगे, अगर 5 मिनट वेट करोगे तो आपको एक डबल मिलेगा। बहुत बिल्कुल कोई बोल रही डॉक्टर, कोई नेस्ट आपके पीछे बोल रही है। सो दे फॉलोड अप विद द किड्स जिन्होंने उसी टाइम खा लिया था। दिस वाज टेस्ट वाज डन लाइक थाउजेंड्स ऑफ किड्स। तो जो बच्चों ने उसी टाइम खा लिया था, लाइफ का प्रोग्रेस नीचे था, और जो डिलेड पेशेंट में थे, जो आई एम विलिंग टू वेट 5 मिनट 10 मिनट मोर अमाउंट, दैट इज द व्हाट यू एज ह्यूमन गॉट दैट पावर। ये आप किसी कुत्ते को, किसी ब्राह्मण को देखो तो अभी भी, अब ऑफ कोर्स हमारे अभी एंड का लिया वो भी कुछ टाइम तक रखती है अपना फ्यूचर के लिए, बट वी आर एट अ मच हायर लेवल स्पिरिचुअली स्पीकिंग। नाउ my question to you, Dr. Sakti, you have nailed down 5 things which our kids need, and which everyone needs. We come from being a human to becoming आपने बोला almighty, उस लेवल पे भी हम जा सकते हैं। अभी किसी का क्वेश्चन आया था कि हम विवेकानंद कैसे बन सकते हैं, इंडियन फार्मेसी का था। सो इंडियन फार्मेसी, आप होप आपको जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया कि विवेकानंद बनना तो पॉसिबल है, भगवान की दर्जे तक नहीं, अगर आपकी 5 क्वालिटीज यूज करते हैं तो वहां तक भी पहुंचने का आपके में मादा है। अब डॉक्टर साहब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। आपने 5 चीजें बता दी, जो चीजें होनी चाहिए। अब ये 5 चीजें फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, एक तो 5 चीजों को हम कैसे इंटरप्रेट करना शुरू करें? बच्चों से स्टार्ट करते हैं कि जैसे यंग हमारे पेरेंट्स बहुत हैं हमारे शो पे, जो आपको भी आके बहुत देखेंगे और कमेंट्स आएंगे, तो हम कैसे, हाउ डू वी स्टार्ट बच्चों में 5 चीजें बचपन से कैसे स्टार्ट करते हैं? और इसमें जो आपने बात बोली थी कि पतंजलि ने बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने सारे वही थे, तो उसको रिलेट कर सकते हैं क्या हम किसी तरह से इसमें डॉक्टर साहब? आपने बहुत सारी क्वेश्चंस एक ही मात्रा में ऐसे ही पूछ लिया, बट आई एम सीइंग स्वामी विवेकानंदा जिसकी पर्सनालिटी डेवलप की शक्ति कहाँ से मिला है। आपको मालूम है क्या विवेकानंद कहाँ रहते थे? वो रिवर के पास था। वो रिवर का नाम बहुत बड़ा रिवर का नाम है। वो भारत में उसका रिवर का नाम हमारा ताकत का सिनोनिम बन गया था, भगीरथा रिवर, भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर एक ही रिवर है भारत में, गंगा यमुना सरस्वती पूरा फीमेल लेडीज है। लॉर्ड रिवर, जेंट रिवर, मेल रिवर, पुरुष एक ही है, ब्रह्मपुत्र। वो ब्रह्मपुत्र रिवर का कनेक्शन। सो स्वामी विवेकानंद कनेक्शन भागीरथी रिवर, भगीरथा। भगीरथ प्रयत्न मीन्स अनस्टॉपेबल एनर्जी फॉर डूइंग जॉब। उसका स्ट्रीम्स का शक्ति, द फ्लो इज सच, ब्लेड फ्लो बोलते हैं उसको, बीच में आप कुछ रखे तो कट हो जाता, स्ट्रॉन्ग रिवर है। सो विवेकानंदा वॉज अ ग्रेट स्विमर, फिजिकल स्ट्रेंथ। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो। वो कन्याकुमारी जाके विवेकानंदा रॉक तक ही वेंट फॉर स्विमिंग, करेक्ट? ही वेंट फॉर स्विमिंग। बाकी पूरा लोग उधर वेट कर रहे थे।
क्योंकि सबको ये नो ओशन पे स्विम करना उतना आसान इजी नहीं है. He just swam because he was a great swimmer. He had physical strength. He used to make gym practice करते थे रोज. Some of the Swamijis, रामकृष्ण मठ का स्वामी जी है, हैदराबाद में एक स्वामी जी था, रंगनाथानंद स्वामी. He was a good football player, volleyball player. वॉलीबॉल खेलते थे रोज. Not a easy job to play volleyball. बंगाल में लोग कैसे वॉलीबॉल खेलते? They will play volleyball and football in the water. ड्राई फील्ड नहीं है, वाटर फील्ड में करते. It's not easy. So each muscle is strong. That is why Vivekananda always keep saying, strong muscles, strong muscle. वो बोलने वाला नहीं था. He was a man who practiced. That is the strength of Swami Vivekananda. So physical strength. That is most essential. And no attachment at all. Emotional full control. बहुत सारे कहानी बोल सकते हैं. I think Vivekananda itself is a great story to tell. If you have not read stories of Vivekananda, Swami Vivekananda, beautiful stories आपको मिल जाएगा. He went to America to attend one lecture, September 11th, Chicago. Great speech. उसके बाद क्या हुआ? People pulled him, asked him to stay there. He stayed there for years, 1 year. वो 1 year के बीच में he used to get lot of letters. वो लेटर्स को लिखना है, आंसर लिखना है. सो इतना सारी लेटर्स आ रहे थे, पूरा लेटर लिखने के लिए वो बहुत सारे टाइम वेस्ट करते थे. वेस्टिंग एक्चुअली. सो पीपल हु आर हेल्पिंग विवेकानंदा सेड, आपका आंसर्स बोलो, हम लिख के दे देंगे. विवेकानंदा सेड, आई कैन नॉट गिव यू दिस जॉब ऑफ राइटिंग रिप्लाई टू माई लव लेटर्स. सो लेटर्स पूरा लव लेटर्स थे, बिकॉज दिखने में भी Vivekananda was a very handsome person, ना? People got into love with him. एक बार ऐसा हुआ था, some lady came and asked Vivekananda, I want to marry you. Beautiful girl. क्यों? I want to have a child like you. विवेकानंदा ने क्या बोला मालूम है? I cannot guarantee that I can produce a child like me, but माता जी, आप मेरा माता है अभी से. So you are getting a चाइल्ड नाउ इटसेल्फ, लाइक मी नहीं है, मे बी आपका बेटा है अभी से बोलो. सी इट नीड्स लॉट ऑफ इमोशनल कंट्रोल. दैट्स इमोशनल कंट्रोल स्वामी विवेकानंदा हैड. इंटेलेक्ट, विवेकानंदा इंटेलेक्ट उतना अच्छा था, यू हैव टू से दैट वो कॉन्वेक्स लेंस पकड़ के हम सूर्य का रेशमी उसके अंदर से खींचे तो फोकस करके आपको सिगरेट भी जला सकते, पेपर भी जला सकते. वो उसको फोकस बोलते हैं. यू नो द कॉन्सेंट्रेशन, अनदर वर्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन इन इंग्लिश इज फोकस. भगवद गीता में कृष्ण ने बहुत सारे लेक्चर्स दिया, पूरा मैसेजेस. उसके बीच में अर्जुना ने बोला था, वेरी हार्ड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में भी नहीं रहा है. कृष्णा टोल्ड, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. only श्रद्धा, focus, concentration. So how do you become intelligent? Focus, श्रद्धा. I go to different, I must have seen millions of children. सब बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, पढ़ाने वालों के लिए एक ही प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन नहीं है. कंसंट्रेशन क्यों नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है. सो हाउ डू यू मेक योर चिल्ड्रन? विवेकानंदा, फिजिकल एक्सरसाइज. खेलने के लिए छोड़ दो उसको, बच्चों को. दे हैव टू स्वेट, प्ले. सेकेंड वन, emotional balance. Third one is intellect, sharp intellect. Mix with the people. Don't tell them, don't talk to them, don't meet them, don't go there, don't come here. Life has to be not a travel, life has to be a journey. Travel is shifting from one place to another place. It's called a travel time. Journey is not with the time. Journey is
leisurely you go meet people, talk to them, understand the culture, mix with. Vivekananda traveled whole India. You know what Vivekananda used to tell? Squeeze me, you will understand India. Squeeze me, you will understand India. You want to know India? Ask me, I will tell you. He traveled. So I understand we are restricting people from traveling, mixing, talking. No, you have to. That is Indian style. Whenever we stand somewhere, we meet somebody else, immediately talk to them. But that culture has gone. Parents have to make this happen. So social, intellectual, emotional, and physical. Spiritual, you need a good master. You need a good coach. That is missing these days. We have all popular people who are all marketed and then SMS कोई बात करते हैं इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश बोल देंगे, उसका मैसेजेस भेज देंगे, उसको संस्कृत भी नहीं आते, उपनिषद भी नहीं देखा होगा, पुराण भी नहीं पढ़ा है, एक श्लोक भी नहीं आते वो लोगों को. You consider him as the great guru. Just because he can put his head down and then leg up, you consider he is a great yogi. वो योगा नहीं है. Every monkey can do that. Yoga is not putting your head down and leg up. ऐसा है तो एटलीस्ट टू भगवान ईश्वर, कोई भी एक ईश्वर का पिक्चर दिखाओ उसमें शीर्षासनम करने वाला. कोई भी एक भगवान नहीं है तो वानर का पिक्चर दिखाओ रामायण टाइम पे, कोई सूर्य नमस्कारम करने वाला कोई भी नहीं है. These are all additions. ये पूरा मॉडर्न योगा है. You don't see even Swami Vivekananda staying in Shirshasana posture or doing pranayama. वो नहीं चाहिए. You be in action. Raja Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, Dhyana Yoga, and Sankhya Yoga. Sankhya Yoga is question, logic, and good communication. Yeah. You can become. We can become. So, Dr. Sir, physically we said, we go out, exercise, build muscles, play, whatever. How to become like emotionally involved, how to develop like being emotional, you said emotional attachment, you use the word. Bondage नहीं रहना है, attachment रहना है. Understand the difference between bondage and attachment. I am attached to Ajit. I love talking to Ajit on this show. But kal se Ajit is not talking to me, you are not calling me, you are calling somebody else for one program. I don't care. Because I am not bounded. ये नहीं है तो मैं मरने वाला नहीं है लाइफ में. You are with me, I am happy. You are not with me, जाने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड में. Yeah, I'm still happy. That should be the वो attitude को बहुत मुश्किल है. It is not that simple. That is what is emotional. Yeah. Yes, so what I'm trying to understand is, I want to give logical steps. So emotional intelligence बढ़ाना है बच्चों का. Yeah. So what are the steps? एक step, दो step, तीन step, क्या है वो चीज? Emotional intelligence कैसे कोई बढ़ाए? See, when any small baby grows, as a baby grows, घर पे एक ही बेबी है, सब लोगों का अटेंशन उसके ऊपर है. वो एक बार हंसे तो, एक बार सो गया तो कितना खुशी आता ना, सब लोगों का अटेंशन उसके. कुछ रो रहा है तो सब लोग एकदम खटा करके आके उसको देख लेंगे, क्यों रो रहा है, ऐसे करते ही रहते. When they become 1.5 year old, पैदल स्टार्टिंग द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एक बार गिर जाते, छोड़ दो, गिरने दो, क्या प्रॉब्लम है, डोंट केयर. वो टाइम पे भी पूरा लोग आके इकट्ठा करके उसको उठा के, ओ क्या हो गया बच्चा, ऐसा पूछे रहते तो ही विल नॉट वर्क. सो उसको खुद छोड़ना है. प्रॉब्लम्स आना है लाइफ में, गिरना है. दे हैव टू हैव दिस प्रॉब्लम. ऐसा प्रॉब्लम्स लेने से फिजिकली दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. इमोशनली ऑल्सो यू आर नॉट टैम्परिंग टू मच. एंड व्हेन स्मॉल बच्चे लोग क्या करते, एक चीज मिले तो उसके पीछे जाते. वो एक पेंसिल पकड़े तो इतना
मुश्किल है, उसमें कुछ हो गया तो क्या होगा, वो छोड़ के दूसरा कुछ आइटम दे देते, वो आइटम भी नहीं देंगे, उसको भी कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना. सो यू आर कीपिंग ऑन टेस्टिंग एंड गोइंग बिहाइंड. एक ही बच्चा 4-5 लोग उसको देखने के लिए, उतना प्रोटेक्शन है, उतना सेफ्टी दे रहा है, उसको फ्रीडम नहीं है. एंड फ्रॉम द बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड when they started going to schools, somebody will steal their. पहले कैसा था, पूरा आइटम उसको दे रहे थे. अभी क्या होगा, वो एक रबर मिले तो एक पेंसिल है, उसके पीछे रबर है, मेरा पेंसिल के पीछे रबर नहीं है, मैं क्या करेंगे, उसका पेंसिल खींचे तो वो रोएंगे ना, पक्का रोएंगे. वो रोने दो ना थोड़ा. What we will do, we are so protective. We will tell no, don't talk to the child, don't give, don't share, don't give anything. See, you are making them like a hose. किधर भी नहीं देखना है, किधर से भी बात नहीं करना है. Let them. So you interact with many people. मैं कैसे बोलते मालूम है, you have a stone, when it is broken, उसके लिए sharp edges रहता है. Whenever stone is broken, sharp edge रहता है. It is not smooth. वो sharp edge stone, when it mix with lot of different stone, वो दूसरा stone से मार के थोड़ा टूटना है, थोड़ा साफ होने के लिए थोड़ा ब्रश करना पड़ता ना, तो वो बाद में it will become a very smooth stone. ए रिवर किनारे पे आप देखे तो इतना अच्छा स्टोन्स मिलता आपको, एग्जैक्ट राउंड. कौन सी मिशन में किया है इसने, दैट इज विथ हिटिंग डिफरेंट स्टोन्स, लूजिंग सम पोर्शन. लाइफ में बहुत सारे पोर्शंस लूज होना है हमको. ईगो, इट हैज टू बी श्रड. कैसे श्रड होगा, वी हैव टू फाइट विथ पीपल. ओनली इफ यू फाइट विथ पीपल, दैट स्ट्रेंथ विल कम टू यू. यू डोंट वरी. Tomorrow when somebody hits you, you don't worry, you know how to hit him back. Correct? If somebody scolds you, you know how to reflect back. See, there is a great saying. Today I was mentioning in one of the Telugu channel पे मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें I was mentioning महात्मा गांधी का नाम we will keep along with non-violence. Actually महात्मा गांधी उतना ज्यादा प्रोपगेट नहीं किया नॉन-वायलेंस के बारे में, बहुत सारी बोला होगा, बट उसके पहले उसका बहुत बड़ा कोट है, उसको मालूम है, गिव मी 2 ऑप्शंस, कवर्डनेस एंड वायलेंस. कवर्डनेस इज वरी एंड रनिंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स. आई वांट टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स. वो प्रॉब्लम्स आ गया तो मैं पीछे हट के जाना है, उसको फेस करने के लिए मन नहीं रहता, उसको कवर्ड बोलते, कवर्ड. सो वो कवर्डनेस के और वायलेंस, इसके बीच में यू नो व्हाट इज द चॉइस ऑफ Mahatma Gandhi? I choose violence. Today what is happening? We are making every child a coward. कोई प्रॉब्लम है, बच्चा उधर मत जाना, उधर प्रॉब्लम है, उसको मत देखो, वो अच्छा आदमी नहीं है. You have no choice to test. Maybe with me you are a bad person, but with somebody else he can be a good person. But we don't allow them to do that. यही मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब का आपसे. मेरे को एक बहुत बड़ा एक जो कोड बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म, और उसके अगला लाइन क्या है डॉक्टर साहब, उसी के साथ अहिंसा परमो धर्म, पूरा क्या है उसका डॉक्टर साहब? दिस इज जस्ट हाफ ऑफ इट. आई हैव नो आइडिया, आई विल हैव टू रेफर. उसका मेरे को संस्कृत नहीं आती, तो उसका ये है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अगर कोई मेरे पे हिंसा करेगा उसके बाद. Yeah, there are, this is one quote, but the original quote of this is Agradas chaduro veda prishtaja shasaram dhanur. Agradas chaduro veda. In the front side I have lot of knowledge, lot of advices. ये advice में एक advice ये है, कौन सी? धर्मा इज इंपॉर्टेंट, अहिंसा इज इंपॉर्टेंट, ये पूरा मेरा वर्बल जर्गलरी है. वो काम नहीं करे तो क्या करना? पृष्ठज शशरम धनुर, पीछे से आप शर ले लो एंड यूज इट. शापादभी शरादभी, किधर शाप देना है उधर शाप दे दो. सब लोग को शाप नहीं, सपोज सम बफलो इज कमिंग टू हिट यू, शाप दिया तो कुछ नहीं होता, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. तो इसलिए क्या करना?
sharada visharam. Use your arrow and then kill. It is permitted. We have to learn this business. मतलब ये जो आपने बोला ना, यही कि ये मैं पेरेंट्स में बात बताना चाहता हूँ कि अहिंसा परमो धर्म इज वेरी गुड, लेकिन जहाँ पे आपके बच्चे के ऊपर उसको स्ट्रॉन्ग, वही स्वामी विवेकानंद वाली बात, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए कि when cornered, it's not, I'm not saying he or she should go and attack first, but when cornered, the child should be able to defend himself for himself. Bruce Lee was the greatest of great, martial artists. वो भी बोलता था कि उससे पूछा कि सबसे बड़ा डिफेंस तुम्हारा क्या है, सबसे बड़ा ऑफेंस क्या है, उसने बोला कि मैं चारों तरफ देखूंगा और जहां से रास्ता मिलेगा मैं भाग जाऊंगा। लेकिन जब मेरा जो कॉर्नर में, then I'm not going to leave them in single piece. So I'm not saying कि हिंसा इज जरूरी, लेकिन आपको पहले अंदर स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा ना। You have to be like a volcano जो पूरा भरा हुआ है अपने पावर से, शांत बैठा हुआ, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो जब वो फटेगा तो फिर कोई बचेगा नहीं। हमारे जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, हर एक के पास अस्त्र शस्त्र है। भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र के सामने हाथ जोड़ा, लेकिन चौथे दिन जब उन्होंने तीर निकाला तो उसको पता था समुद्र में खत्म हो जाऊंगा। तो वो पावर आपको बनाना पड़ेगा। ये बच्चों को डरपोक बनाना, उधर मत देखो, उधर मत जाओ, वो खराब लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, इसके चक्कर में हमारी सोसाइटी बहुत नीचे आ गई हमारी। तो डॉक्टर ये जो just to add to that, when Arjuna वार के सामने पूरा रिलेटिव्स के पास जाके उसका अंदर वायलेंस था, जल रहे थे, आई कैनॉट फाइट, पूरा उसका पूरा एजुकेशन वेस्ट हो गया, बिकॉज उसका एजुकेशन यही था का फाइटिंग वाज हिज एजुकेशन। अंदर वायलेंस है तो यूर एजुकेशन बिकम यूजलेस। सो भगवान ने क्या किया, अंदर साइलेंस करके बाहर वायलेंस करो बोल के बोला उसको। सो व्हाट इज भगवत गीता, किसी के अंदर वायलेंस है वो चेंज करके साइलेंस करना है। यू कैन बी वायलेंट आउटसाइड, you start fighting with others, but internally you have to be strong. Most best emotional balance class is from Bhagavad Gita. मैं तीन बार भगवत गीता का पूरा क्लासेस खत्म कर दिया। So I keep saying violence to silence is भगवत गीता। एक ही मैसेज है भगवत गीता में, मा शुचा अशोच्यानन्य शोचस्तम। स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन भगवत गीता में 2nd चैप्टर पे 7th श्लोक है, अशोच्यानन्य शोचस्तम, don't be sad. That is how it is starting. Ending 18th chapter 66th shloka, ma shucha, don't be sad. So what is Bhagavad Gita's message? Don't be sad. That is emotional control. Yeah. Yes. उसी के अंदर अवसर की बच्चों की तो हमने बात कर ली, बट मैंने ओवरग्रोन बच्चे देखे हैं वो इमोशनली बैलेंस नहीं होते हैं। They are full grown kids, they are like full grown human beings, but अब वो लोगों को आपकी जो लेक्चर आप दे रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं, इसके बाद if they want to improve upon, you said ना, people are like emotional bondage is there, and उनको नहीं पता लगा कि उनको नहीं समझ में आया अभी तक जिंदगी को। सो उन लोगों के लिए स्टेप्स क्या ले सकते हैं डॉक्टर साहब, जो फुल ग्रोन मैन है, जैसे सपोज मैं हूँ और मैं इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हूँ, तो हाउ शुड आई स्टार्ट कि मैं इमोशनली बैलेंस 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में हो जाऊँ, सो दैट कि मेरी लाइफ फिर से जो अंदर शांति तभी आएगी जब मैं इमोशनली बैलेंस होऊंगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। सी व्हेन फर्स्ट क्लास में फर्स्ट रैंक मिले तो यो वेरी गुड बॉय, एनकरेज। वेस्टर्न सोसाइटी में कैसा है, आपको कुछ भी रैंक मिले तो भी दे विल से वेरी गुड, वेल डन, बिकॉज इमोशनली वो बूस्टिंग दे देता। एक्चुअली वेदर यू आर पासिंग, वेदर यू आर गेटिंग फर्स्ट रैंक, वेदर यू आर गेटिंग सेकंड रैंक, एक बार फेल हो सकते, you have to tell that A not important, this is not important. You can give examples. LKG में फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक मिले तो definitely you will be again in second class to third class to fourth class. What is that importance in life? So you identify मेरा ताकत, मेरा interest. See, you can draw pictures, you are good in picture drawing.
You are good in cultivating agriculture में आप, you have a talent in agriculture, वो दे दो. Tailoring के लिए interest है, उसको दे दो. So everybody can need not compete. एक ही रास्ता पे, एक ही competition पे, maths में first, physics में first, chemistry में first, ऐसा नहीं चाहिए. Who gets first in the classrooms? Those memory is good. Memory is only good. But if you look at the people who had got good memory, good ranks, probably later in life they have failed in many problems in life. Practically उसको कुछ भी पता नहीं है. There are beautiful movies in which people got all the rank, no, MBA भी मिला है उसको, बैंक टेस्ट भी लिखा है. But you go to bank to fill up a form, he don't know how to fill up a form. He is qualified to become manager, टेस्ट लिखने के लिए अच्छा है, but he don't know how to fill up a form, क्योंकि अभी तक काम नहीं किया उसने. So that's a skill to be developed. So practical, making people practical is more important. हमारा evaluation आजकल पूरे exams, teachers will evaluate and tell this child is good. As a mother you cannot evaluate, as a father you cannot evaluate. That is more important. How do you develop this? See, DrTPS has got a DNA. I have got a cell pattern. I have got a eating pattern. I have got a brain, which is given by my parents, slightly developed by environment. So हमारा 30% जीन से है, 30% environment से है. Next 30% with my own effort, मेरा skill development. All that together maybe 33% about 100% हो जाते. If I am not having a good environment, मेरा environment सही नहीं है, I may grow slightly less. मेरा parents का gene अच्छा नहीं है, I will grow little less. So how to be blamed? Why do you want to find fault with the people? Instead of that, मेरा पेरेंट्स का थोड़ा जीन, उसमें थोड़ा एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट है. DrTPS, माय फादर वाज ए फार्मर. अभी भी मेरा इंटरेस्ट फार्मिंग पे है, बट आई हैव नॉट पुट इनटू फार्मिंग, इसलिए मैं फार्मिंग नहीं कर रहा हूं. सो आई हैव डेवलप्ड सम अदर स्किल. पब्लिक लेक्चर में दे रहा हूं, इतना पब्लिक लेक्चर दिया होगा, बट दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स. दैट इज अ स्किल विच आई डेवलप्ड. मेरा एनवायरनमेंट पे भी नहीं था, नॉट माई फैमिली मेंबर्स, नॉट माई सोसाइटी, नॉट माई ग्रुप, नॉट माई कॉलेज. सो एवरीवन विल फाइंड, सब लोग उसका फील्ड दे विल फाइंड आउट. हमारा लाइफ ऐसे रहना है एक बफे डिनर का जैसा. गो एंड टेस्ट एवरीथिंग एंड फाइंड आउट व्हाट इज माई पैशन, व्हाट इज माई फील्ड. वो फ्रीडम दे दो बच्चों को. डोंट मेक देम टू सी. आई वाज थ्रोन आउट ऑफ एन स्कूल इन द 8th class being the worst student. I never had any prize in any of the competitions in my, but I participated in everything and failed everything. So मेरा life में I have no problem because I have seen enough failure. I have no shame. I have no shame in telling that no, I failed in something. बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है, एक बार फेल हो गया तो फिनिश्ड, हो गया, गैस आउट हो गया उसका. भाई हाउ डज इट मैटर? सी, मेरा और एक गुरु है, उसका नाम है नित्य चैतन्य यति. एक बार एक नाइस लुकिंग हैंडसम बॉय केम एंड टोल्ड गुरु, एक कहानी था ऐसा, केम एंड टोल्ड गुरु, आई लॉस्ट माई गर्लफ्रेंड, आई एम सो डिप्रेस्ड, आई लॉस्ट माई गर्लफ्रेंड. गुरु ने क्या पूछा मालूम है? आर यू सो डिप्रेस्ड एंड यूजलेस दैट यू डोंट गेट अनदर गर्लफ्रेंड इन योर लाइफ? Why do you feel so depressed? Correct? Yeah. See, you have lot of options in this world. You have lot of options in this world. Right? Now, this is Nitya Chaitanya Yati का एक quotation है. Now, DrTPS का एक quotation बोलेंगे. You stand in a bus stop, you missed a bus. You missed one bus. Right? एक बस आपको नहीं मिला, वो छोड़ दिया. That bus has left you without taking you. Once you miss a bus, you get lot of buses. Once you miss a bus, you get lot of buses. Once you get into a bus, you missed a lot of buses. Wow.
Correct? That's so true. That's so true. See, once you get into a job, you missed a lot of jobs. Suppose you don't get a job, what you will do? You keep applying different jobs. एक बार शादी हो गया तो परेशान, शादी नहीं हुआ तो you have lot of options. Okay, okay, so there are some questions from our viewers. Let's take one by one. हमारे आर.एस. मेहरा जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं डॉक्टर साहब. So इनका क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, how to control our negative feelings? See, negative feelings, positive feelings, उसमें फर्क नहीं है. When it is good for me, positive. When it is not good for me, negative. See, when I was not using footwear. फुटवेयर नहीं था हमारे पास. एक शूज नहीं है, फुटवेयर नहीं है. चाइल्डहुड में when we walk, some thorn will go into the legs, and then I will cry and come back to my mother and say, leg is paining. You know what mummy will say? Mother will say, nice that you got one nail. उसके थोड़ा आगे गया तो there would have been a snake. हम ऐसा विलेज पर था. So why God has given you a throne? To stop you for not traveling, so that you are saved from the snake. So when we get problems, we think it is a big problem. But if you have faith in somebody who is guiding you in this world, that energy, a very small problem will become, there is some reason for me to have this. You will find reasons. Don't think everything will go favorable to you. That is why I said, once you miss a bus, that's a bad feeling. Oh, I missed bus, bad feeling. No, don't worry. You get another bus. You failed in an exam, very good. You can write again. Correct? That should be the approach. Yeah. There is nothing wrong in this world. Only thing, I did not get it, somebody else got it. I am not getting that happiness, somebody else is getting that happiness. That happiness is inside you. I can decide. I don't care. That's what is to be done. There are a lot of options. So you keep looking at options, then negative feelings will not be there, only positive will be there. That is what is to be done. Beautiful, Dr. So next comment is from Indian Pharmacy. Namaskar, sir. I'm from Rajasthan. DrTPS is a very knowledgeable. We want to get more and more from him. Thanks. Question पूछिए. Yeah, next question. Question है Dr. Om Pure Organic. Watched earlier shows of DrTPS. He is an amazing personality. Thanks for show, Ajit sir. Dr. sir, please throw some light on the types of personality. Yeah, it's a very tough question. Modern psychology has got a lot of descriptions of personality. Split personality. No? Actually, all these are not at all important. Leadership is one part of personality. Communication skill is another personality. All these can be told. I will give you personality. I think Ajit will love always describing with slokas, right? Who is a leader? Who is a leader in a forest? Who is the king of the forest? We want our children to be the king. Kingly life chahiye. Correct? So who is the king of the forest? Sure, Maharaj. How? Who told? Authors, writers, storytellers. Kyun? Who told these authors? Who told these storytellers? शेर, लायन, लायनस, किंगली फैमिली है, किसने बोला है? वो हाथियों ने आके बताया ना. नहीं. स्वयमेव मृगेंद्रजा, स्वयमेव मृगेंद्रजा. न संस्कार हो, न क्रिय हो, न संस्कार हो. There is no special decorative program in which the lion is made as the king of the forest. ऐसा कुछ सेरेमनी कहीं पर देखा है आपने? No, not there.
Na samskara ho. There is no activity, cultural program, no programs. Na samskara ho. Na kriya ho. Simhasya kriyate vane. As decorating lion as the king of the forest. Who declared? Swayameva mrigendraja. The lion keep walking like a lion, keep walking like a lion, like a king, and say, you have a doubt? Come to me, I will show you what is my power. Is it not the greatest personality? What else is required? You have to be the way you want. That is what Vivekananda said. You behave like what you want to be, tomorrow you will become that. So we don't classify. We have no classification on personality. I am talking in Eastern philosophy style. You want a Western philosophical lecture on personality? I can list out a 10 list of personality and say this is no interpersonal, intrapersonal, no all that can be implicit, explicit, all that can be said. I think they're all unimportant. You decide you have the capacity to become a leader. You decide you have the capacity to communicate. Good communication makes you good leader. Good decision taking ability. Be with the group and think beyond the group. Highly creative, highly educated, highly powerful. There is a beautiful sloka, another sloka. Anima, Mahima, Lekhima, Garima, Ishitvam, Vashitvam. I will only give Eastern philosophical descriptions. What is the greatest personality? Anima. Anima is when a great person comes, you become small and then become subordinate to him. Be very small. Becoming smaller is great personality ability. Suppose you are a Panchayat president or maybe the leader in a local city. But the state president comes, you show the power, finished. Next day you will be thrown out of politics. So you have to show in front of him as small as you can. That's called anima. Anima, anu means atom. Be like an atom. Anima. Mahima, be very big. When he see his people around him, what he should do? Show the power. Who had this? Vivekananda had this. Krishna had this. You can see Krishna showing, becoming very small, becoming very big also. Vishwarupa Darshan, as big as the world. Right? Vivekananda, when he meets people, he will show his terror, power, all that will be towering personality he will show. But when he goes to Ramakrishna, will fall on his feet. Correct? Anima, Mahima, Lekhima, weightless, Garima, show the full weight. You go to your subordinate, you show the weight. But you go to your boss, let him show the weight on you. Otherwise you will lose your job. That is personality. Adjusting with the situation. Diplomacy is personality. Anima, Mahima, Lekhima, Garima, Ishitvam, Vashitvam. I can control people around me and then make them as my followers. But when I see a great person, what I will do? I will follow him. I will not say that, no, I am the master. No, I am not the master. I am only the servant of masters who gave some knowledge. I am only a trustee. I am sharing and giving to you. Suppose somebody is respecting me and saying that I am knowledgeable, not for me. Hand over to him because it is from them. I am only a trustee. You understand this Manimadishta Siddhigal. What is personality in India standard? Manimadishta Siddhigal. Ishitvam cha Vashitvam cha Prapti Pragashyameva. These 6 qualities, wherever it is there, they will become successful. Anima, Mahima, Lekhima, Garima, Ishitvam, Vashitvam. Prapti Pragashyameva. That is how they become Prakasham. Prakasham is self-enlightened. They will become supreme personality. They will shower light to everyone around them. Great quote. I can give plenty like this. ये कहाँ से quoted और sir? This is beautiful. These are all the Ratna. There are a lot of beautiful sloka Ratnas, which are quotable quotes. Quotable quotes. Yeah. Next question है sir. अर्थ सत्वा. Good evening Dr. Sir and Ajit Sir. क्या किसी person के लिए अपनी personality को change कर पाना possible है? कैसे please बताएं? 100%. हमारा पर्सनालिटी में 2 चीज है. One is character, another one is behavior. Character is हमारा अंदर क्या है वो कैरेक्टर बाहर नहीं आता. कब आता है? When you get angry, you will say, I will show you my face.
I will show you my real face. When you get angry, you speak that. क्यों? उधर तक हम छुपा के रखा था हमारा actual face. So inner content is different from behavior. What is personality? Personality is behavior. How do we show this? आप आर्मी में है, you have to be a disciplined person. But you see those army people when they come for 2 months holidays, entirely different. Why? Because inner personality will come out. Right? So personality can be trained for a purpose. ऑफिस में अलग है, हाउस घर पे अलग है. You see a great policeman, terror police. Everybody is scared about that police fellow. उतना टेरर है उसको देखे तो you will get scared. But वही पुलिस फेलो घर पे गया तो maybe his wife will become more terrorful than him. He will get scared and say please. Correct. So we will see a lot of people at different places. हमारा personalities अलग है. See, somebody is a great senior officer at बहुत बड़ा officer है, बहुत बड़ा rank है, but I am sure when they see their mother, they will become a small child. And when they meet their friends, 8th grade, 9th grade, 10th grade पे मेरा classmates में देखे तो, do I show my power as I am an officer? Do I behave like an engineer? Do I behave like a scientist? No. When I see my kids, when my children come, I will play with them like I am a father to them. So we have different phases. We have a role that is to be played differently in our life. Understanding this in the right style is what is personality. When, where, why, how, in front of whom you have to behave. Oh, awareness is what is actual personality. That can be made by, that is why we keep saying, don't keep your leg on the table. Ghar pe, you have to sit on the floor, keep your leg on the table only. But don't do it in the office. Oh, common sense. But some people don't get that common sense. And that is what is to be taught to them. So by default, we are people simple, accidental, immediate response है पूरा आ जाता हमको. But when you behave in a society, a style है, ऐसा behave करना है. How the society demands, वो demand, we have to obey that demand. उसके लिए थोड़ा control चाहिए. That control is what is polishing, modification. So actually, life is very simple, but we add a lot of social content inside that. Yeah. जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्रिपल जेड मतलब ये हमारे रेगुलर व्यूअर है. हेलो डॉक्टर टीपीएस सर एंड अजीत सर, हाउ मच इज द इफेक्ट ऑफ अपब्रिंगिंग एंड द एनवायरनमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ समवन्स पर्सनालिटी? अभी मैं बोला था ना 30% by birth, 30% with the environment, and 30% is your own interest, peer groups. Environment is maximum peer groups, especially for boys. Girls, they are more with the heart, they are attached. I am not saying everybody. Traditionally, by manufacture, they have a heart, good heart, so they are more attached to parents, especially mother. All their problems they will tell their mother. Mother will talk to, आप घर पे देखे तो mother will know वो children का classmates का नाम, वो कहाँ से है, वो उसका relatives कौन कौन है, उसका friends कौन कौन है, सब biodata generally mothers will know. If some mothers don't know, that means they have little quality less as a female. But gents generally we don't, because our attachment to the heart is very less. We are more practical. That is what we think. And Nelson Mandela says it is difficult to have two H. One head and one heart you cannot have. Either heart is big or head is big. So I have written a poetry. Give me another birth in life where my heart is head is less and heart is more, so that I can start loving people more than being more practical and stubborn sometime, right? So
upbringing has, with whom you are, आप किसके पास है. That is why grandfather, grandmother, they have seen a great life. They have got a great experience to share. They have stories to tell. मैं लास्ट टाइम भी बोला था, मेरा बहुत बड़ा कंसेप्ट यही है, ग्रैंड मदर चाइल्ड केयर सेंटर. सो आई वांट ग्रैंड मदर्स चाइल्ड केयर सेंटर. सब बच्चे लोग, आई विल टेल यू, मैं दिल्ली पे था. whenever I see young children, I will ask them only few questions. I will ask, you know what do I ask? A 6th, 3rd class, 4th class, 6th class LKG बच्चों को मैं ये पूछते, when they are becoming 8th, 9th grade, they don't tell the answer, they polished, they are polluted लोग हैं. छोटे बच्चों को मैं पूछते, how much mark you will give it to your mother? As a mother, how much mark you will give it to your mother? You know, definitely the answer is 70, 80, 20%, 0% भी दिया है. My mother 0, वो भी इतना गुस्से से बोलते. Okay, next question, how much mark you will give it to your father? वो भी इसके बीच बीच में आता, 0 के 80, 90, 70, 50 उसके बीच में. इमीडिएटली आप घर पे कौन कौन है? ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, उतना हंस से बोलते हैं ना. So how much mark you will give? Without a doubt they will say 100 marks. Okay. Then I have another question. You know what is the question? I ask grandmother. Grandmother 100%. So generally grandmother will always find fault with your mother. आपको कैसे पता है? Because that is what is fed in the child, so that is because 0. Correct. Correct. No, such grandmother, grandfather we don't want. We have to make grandfather, grandmother so good, they will not find fault with anybody. See, mother is working, father is working, they are going for earning all the time, the child is with me. That doesn't mean I make all other people hatred towards my child and child will start hating others. That नहीं होने वाला. You need people who are liberal, who understand. I think I am 100% sure the children will get lot of wisdom from them. So upbringing with a lot of wisdom, values. That is why I want a group of people join together, start a informal education system up to age 3 to grade 3. Age 3 to grade 3. Age 3 to grade 3. That is from age 3 to 8 years. Almost 5-6 years हमारे बच्चों को पूरा खेलने का, handwork, lot of craft. I am sure only playing should be there, but they should have lot of learning, internally learning. And that learning is an experienced learning sharing. वो होने वाला है. तो I am sure the next generation will be much much better than this generation. हमारा generation उतना अच्छा नहीं है. Maybe next generation will become much better if my dream of having grandma child care center happens. Beautiful, Dr. And that's what I'm trying to do, Dr. Yeah. I'm thinking our job is to make sure that our next generation is better than us. Yeah. Create small cluster of such schools and call me. I will be your volunteer. Thank you, Doctor. So we have got 2-3 more questions, Doctor. Quickly, let's go through because already 1 hour 15 minutes. So Yeah. Maitri is asking, what is charismatic personality? How can one develop it? So she's asking maybe like your charismatic personality. No, charismatic personality has no definition. I'll tell you, why do you like Shankaracharya? Is it because he looks so handsome? Why do you love a poet? Is it because the poet has got a brilliant intelligence? He's so practical in his life, he's so rich? No. Why do you like Amitabh Bachchan? Is it because he has acted in so many movies which are touching your heart? Yes. But do you know him as a person? Do you know whether he is a good person or not? So charisma is what makes you to feel good for some point of time with your interest matching. Suppose I don't like cricket and somebody who plays a cricket come and sit beside me, I don't care him because DrTPS has no such interest in
cricket. But a film personality comes, yeah, definitely I have love. So what is charisma is what attracts you. You are a magnet and so many things get attracted. Who is getting attracted depends on what is that sort of magnet you are attached to. So charismatic is getting attracted, but that changes. एक आदमी से दूसरे आदमी को अलग अलग हो सकते हैं. So it can be physical. Oh, when somebody looks good, yes. But somebody has got a total attachment to you. Don't put your mother. Oh, mother is so beautiful. No, we know my mother. I know my mother is not as beautiful as maybe a no. She was not a Miss Universe beauty in 8th house code. But still, I love her and I say my mother is so beautiful. That is because I have got an emotional attachment. So, in my mathematics professor was so good and great. That doesn't mean he loves me and he has got an attachment. But his brilliance, I love him. So, physical, emotional, intellectual, social. Because somebody has got a social recognition. The chief minister, I love. Not because chief minister looks very good, his brilliance is very good, he has got love towards me. He has got a charisma because he has got a social recognition. So, charisma has got again fivefold. But the program we started is with the fivefold. The charisma can be physical, emotional, intellectual, social, spiritual. I cannot explain better than this. I think I have done the job. Yeah. So also Lakshmi Pawanji is asking some one question that how can like we see positive in everything. So she says, I didn't get sleep. What is positive thing in that? Please explain. I have a book here, Life Made Simple, in which this question was answered 20 years back, and many people got peaceful sleep by following that prescription. And the following the prescription is you sleep like a small baby. When you go to bed and sleep, you think that you are a small baby on your mother's lap, and then you are sleeping like a small baby. And go to bed only when you get real sleep. Don't force sleep on you. Not required. A deep sleep for some Jagrat, Swapna, Sushupti. 3 states is there. Jagrat is I am live. I am so tired. You play shuttle, definitely you get sleep. You do a lot of exercise, you get sleep. Swapnam is in between Jagrat and deep sleep. Actually, that is not a good time. You are wasting time in the bed without doing anything. So, I suggest people to go to bed only when they get real sleep. And when you go to real sleep, you can see children. They play around a lot and then do all circus, magic, everything they do. And then what do? They go to sleep immediately. 1.76 in this book says, get into the habit of sleeping like a baby. 1.76 in this book. If somebody wants, send me a WhatsApp, I will send you that. And it's only one page. How to sleep is being explained here, right? And I got a comment during that time. It was long back. Yeah, good advice. Aha. It's really working. I am able to sleep well like a baby. Thank you. Vinita has written that time. I tried this. Really works. Somebody else have written. It's like a dialogue. I used to post into my Orkut and people used to answer. Like a Facebook, grandfather was Orkut, right? So this is a book from Orkut. And this really worked. 1.76, get into habit of sleeping like a baby. This book can be downloaded. Otherwise, send me a WhatsApp. Search DrTPS, DrTPS without a gap. Ajit gives gap in between doctor and TPS. I am Dr. TPS, continuous. Just put Dr. TPS and then search. You will reach my website. Look at the books. Download this. Life Made Simple. You can download it and use it. Yeah, so after this video ends, friends, I'm going to post Dr. TPS contact details and Dr. Saab has if किसी को कुछ problem है, they can contact him directly and he is more than willing to help everyone and anyone. लक्ष्मी पवार जी आपको दो चीजें बस मैं बोलूँगा. You're looking for positive things. So positive things तो सबसे बड़ी positive thing अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप नहीं भी सोई हैं, कुछ भी होता है लाइफ में बहुत कुछ होता है. आप ये लिख रही हैं ये comment, that's the biggest positive thing I would say. You are alive right now. We are alive. How many people die every day? We have to find a way to look positive in everything.
Dr. Viktor Frankl, he was a psychiatrist in Hitler's Nazi camp. He saw the death of his own family and he had to pull their dead bodies from the concentration camp. No, What else can we do? I think Lakshmi का question ये है, sir, I don't get sleep. What is positive thing in that? Actually, Prime Minister of India cannot sleep as we are sleeping because every day there are a lot of activities. So if you are too busy with great things in your life, assume tomorrow Lakshmi Pawar has to give a welcome speech for Prime Minister visiting and you are the person who has to give a welcome speech. आज निद्रा नहीं आते. 100% you cannot sleep today. Because you are doing a great thing in your life which you have not done. Right? So if Lakshmi is such a person who is doing lot of great things in life, I think you don't sleep. Actually, sleep is not a must. You need only deep sleep for some hours. That's good enough. When I conduct camps 10 days, 10 दिन में नहीं सोते. Maybe 10 minutes, 15 minutes in between एक बार deep sleep में dum, I will go and come back. Because every time somebody is asking questions, I have to take care, so many things will be there. People keep coming and then asking questions. Oh, so jate, next दूसरा fellow will come. So they are in rotation, but I cannot sleep now. So Lakshmi asked a beautiful question. What is positive thing in that? I am not getting sleep. What is positive thing that? You must be a very busy person, great personality. आपके पास बहुत धन है तो भी sleep नहीं आता. Because घर पे बहुत. How can you sleep? Yeah. Okay. So we finish that with one sentence. Viktor Frankl, he went on to become the biggest, I will say one of the biggest personalities of the last century. और उसकी बुक है, जरूर पढ़िएगा. मैं हर एक को बोलता हूँ. Man's Search for Meaning. And he said that whosoever gives hope on life, whosoever, their defeat is certain. आप ये बुक जरूर पढ़िएगा, Man's Search for Meaning, and you will find positive in anything you find in your life. So और ये आपको हम दे देंगे डॉक्टर साहब का जो है अभी कॉन्टैक्ट डिटेल. सो प्लीज सेंड हिम एंड ही इज गोइंग टू सेंड. डॉक्टर साहब आपका कॉन्टैक्ट डिटेल यही है, डॉक्टर टीपीएस 9447437948. 37948. Yeah. 9447437948. Yes. और ये डॉक्टर साहब का मेल आईडी है. Yeah. आप लोग प्लीज ईमेल करिए और आप लोग प्लीज डॉक्टर साहब से, जैसा विवेकानंद ने कहा था, मुझे निचोड़ लो और मेरे से इंडिया निकलेगा. और डॉक्टर टीपीएस तो आपके बच्चों का और आपका पर्सनालिटी निकलेगा. सो आज डॉक्टर साहब को जाने से पहले लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. डॉक्टर साहब नमस्कार. डॉक्टर टीपीएस एंड अजीत जी, पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है? बुकिश डेफिनेशन तो बहुत पढ़ी है. असली जिंदगी में किस प्रकार के व्यक्ति को हम कहेंगे कि ये प्रभावशाली व्यक्तित्व है? When your head is up and chest is broadened, when your head is up and chest is broadened, and you can stand in front of anybody and speak, आपका communication skill अच्छा है, your way of presenting yourself is good, आपको shame नहीं है, that's called dignity. You keep your dignity and then speak to people, and you can communicate to people, you can talk to anybody without fear. अंदर fear नहीं है आपको. You can keep your shoulder up and your head held high. विवेकानंद ने यही बोला था, keep your head high and shoulder chest up. I am sure he has got a good personality. You don't worry. Nobody is going to define your life. We are defining our life. Nobody has control on our life. I have control on my life. As long as you can understand, I think that is what is exactly required. Beautiful, Doctor. So, आपका show very appropriately finishing with this comment from Alka ji. He writes, "We hardly get such an intelligent person around." Thanks, Ajit. So, thank you so much, Dr. TPS, for coming on our show. और आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा इस शो के बाद कैसा लगा, और जो भी कमेंट आप करेंगे तो डॉक्टर साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब आप लोग के जवाब दें और हमारे ऐसे पाथ मतलब मार्गदर्शन करते रहें. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. डॉक्टर साहब, Thank you, Ajit ji. It's a great opportunity and I am blessed to be among all these people who have got great love and they are showering love and kindness to me.
Hope we will Thank physically you, able Dr. to meet sometime very soon. Pranams and Yes, sir. namaskaram. My love and blessings to everyone. Thank you so much. Thank you. ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग का आज मुझे पता है कि आज सैटरडे को आप लोग सब काफी लोग बिजी रहते हैं, तो शायद इसलिए आज कम लोग आए, लेकिन ये शो पोस्ट होने के बाद जरूर से देखिए और शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए। आपके बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ आपके बच्चों के उससे मैं बोलता हूँ कि हमारे अगले जनरेशन को ठीक करना है, तो बच्चों के लिए हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और वही हमारी कोशिश है। और डॉक्टर टीपीएस के पास अथाह नॉलेज है, अथाह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सो प्लीज आस्क हिम क्वेश्चंस एंड आई थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच। कल 11 बजे डॉक्टर पांडे के साथ मिलेंगे क्वेश्चन आंसर आएंगे। सो जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ भारत, स्वस्थ हिंद। Good, nice. थैंक यू डॉक्टर। Thank you. मजा आया बात करके। सो आप लोग आपका people ask for your number and email, so I'll already posted in the comment here, but I'm going to post in the description as well. So let's keep in touch, डॉक्टर साहब। मजा आया आपसे बात करके और थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड वर्क। और आपको आज इतने हमारे शो पे थैंक यू वेरी मच। Thank you. मिलते हैं डॉक्टर साहब। Thank you. God bless you.